हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज +3 पिलामानଙ୍କର सीपेट एजुकेशन 2023 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा जे सीपेट कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो मैंने पीजी करने चाहते से जो एग्जाम देवे एंट्रेंस एग्जाम तार 2024 क्वेश्चन भल भाव डिस्कसन करते आंसर एक्सप्लेनेशन तार देते की पॉइंट्स देते। आज 2023 मसीहार क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ताले जो मैंने मो वीडियो नुआ अच्छ मो चैनल नुआ अच्छ से रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर सांग मानू सेयार कर। चलो ताले वीडियोटी स्टार्ट करवा। युटा मुझे गुड़े क्वेश्चन आनी 20टी क्वेश्चन आज डिस्कसन करवा। तापर आउ 20टी तापर आउ 20टी एमती करवा। एवं सीपेट्र जिते सीपेट एग्जाम जिते इम्पोर्टाट क्वेश्चन मु सब नेक्स्ट वीडियो सब आनी। चलो ताले वीडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन होची द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विथ वैल्यूज इज नोन एज द आंसर इज व्हाट ना द ऑप्शंस आर मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी एंड लॉगस लॉजिक एटा बोधे हेतिबो लॉजिक स्पेलिंग मिस्टेक हे पारे क्वेश्चन रे थाई पारे एमती लॉगस बोलिकी। तेणु द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विथ वैल्यूज इज नोन एज द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी। तेणु मेटाफिजिक्स कहले एपिस्टेमोलॉजी कहले नॉलेज, देन एक्सियोलॉजी कहले वैल्यू वैल्यू बुझाए कौन ना एक्सियोलॉजी। देन द इंग्लिश वर्ड तार एक्सप्लेनेशन कौन रही पे देख ना द इंग्लिश वर्ड एक्सियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वैल्यू। ऑल्दो क्वेश्चन ऑफ वैल्यू आर एज ओल्ड एज इज फिलोसफी इटसेल्फ। As old as philosophy itself, axiology refers primarily to the writings of Austro-German phenomenologists such as Franz Brentano, Alexius Meningo, Max Schiller, and Nikolai Hartmann. Their influence has been transmitted to the Anglophone world through the writings of G. E. Moore, W. D. Ross, Roderick Silom, and more recently Robert Nozick. The axiological movement emerges from the phenomenological method. The axiologists sought to characterize the notion of value in general, of which moral value is only one species. They argue with notable differences between them against Kant that goodness doesn't exclusively derive from the will but exists in objective hierarchies. They emphasize the extent to which it is through emotions and feelings that human beings discern values. The notion of right action is understood derivatively in terms of the values which emotions reveal. So the first question कौन रही ना तुम जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी रही दैट इज मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। Epistemology means knowledge, metaphysics means reality, and axiology means what? Axiology means values. Then the second question is which of the following educational philosophies prescribes strict discipline for students? ये क्वेश्चन टा बारंबार आसूची तुम ये ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी गोटे क्वेश्चन मस्ट आसूची 2024 आसला 2023 आसी। तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसफीज प्रेस्क्राइब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट्स? ऑप्शंस होची आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दिस। प्रैग्मेटिज्म के ये स्पेलिंग मिस्टेक है प्रैग्मेटिज्म, तेणु प्रैग्मेटिज्म ये हम। तेणु आंसर इज ऑप्शन डी। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन फिलोसफी Pavaja ceremony for education? Which Indian philosophy includes Pavaja ceremony for education? Options are Vedanta, option B Sankhya, option C Jainism. Printing mistake बहुत होइछि Jainism एटा हो Jainism, and option D is Buddhism. The correct answer is option D. Buddhism रे Pavaja ceremony करा जाई थाए। तार एक्सप्लेनेशन होचे Buddhism is a faith that was founded by Siddhartha Gautama, also known as the Buddha, more than 2500 years ago in India. With an estimated 500 million to 1 billion followers, scholars consider Buddhism one of the major world religions.
As a non-theistic faith with no god or deity to worship, some scholars describe Buddhism as a philosophy or a moral code rather than an organized religion. Many of the beliefs and practices of Buddhism revolve around the concept of suffering and its causes. Buddhism has historically been most prominent in East and Southeast Asia, but its influence is growing throughout the West. Many Buddhist ideas and philosophies overlap with those of other faiths. The next question is, which of the following philosophers believes in the dual nature of reality? Options are idealism, Sankhya, Vedanta, and Jainism. The correct answer is option B, Sankhya. Dual nature କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁର ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି। ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲୋସଫି ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ that arose on the Indian subcontinent. Six philosophical systems have evolved to embody India's intellectual quest for truth throughout the ages. These are Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa, and Vedanta or Uttara Mimamsa. Almost all Indian schools of thought recognize the principle of karma and reincarnation. Reincarnation कहले कौन ना rebirth हमें जाको कहूचे. And the goal of Mukhya is viewed as an escape from the cycle of births and deaths. Mukhya liberation is regarded as the greatest aim of a human effort. Sankhya is the oldest of the orthodox philosophical school, and it holds that everything in reality is derived from Purusha, self, soul or intellect, and Prakriti, matter, creative agency or energy. ତେଣୁ ଯେଉଁ dual nature କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ and ପ୍ରକୃତି. Then the next question is, who said mind must be consulted on its own growth? Options are Plato, option B Mahatma Gandhi, option C Rousseau, and option D Sri Aurobindo. The explanation କ'ଣ ନା Sri Aurobindo was an Indian philosopher, yogi, Maharshi, poet, and Indian nationalist. He was also a journalist, editing newspapers such as Vande Mataram. The great originality of Sri Aurobindo is to have fused the modern scientific concept of evolution with the perennial gnostic experience of an all-pervading divine consciousness supporting all phenomenal existence. His synthesis was not a philosophic construct but a realization stemming from different spiritual experience. The unfolding of more and more complex forms and higher levels of consciousness out of an original total material inconscience is seen as the gradual return to self-awareness and the diverse self-expression of involved spirit. This process is evidently not complete, and the evolution of higher levels of consciousness and less unconscious forms of expression are to be expected. But with the development of mind, individual human beings can, if they choose, use their will and intelligence to begin to participate consciously in this process of self-discovery and self-exploration. Then the next question is, who propounded the concept of a tripolar process of education? Option A is Plato, option B is John Dewey, option C Tagore, and option D Thorndike. The correct answer is option B, John Dewey. John Dewey emphasized on tripolar process of education. Then the next question is, the differences among the qualities within one individual is known as within one individual. जो आमर रही इंडिविजुअल डिफरेन्स यही पर्यंत आसीगला तुम फिलोसफी पेपर तापर आसला साइकोलोजी पे देख साइकोलोजी जो अच्छी तुम इंडिविजुअल डिफरेन्स द डिफरेन्सेस एमंग द क्वालिटीज विदिन वन इंडिविजुअल इज नोन एज इंटरनल डिफरेन्सेस क्वालिटी डिफरेन्सेस इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेन्स एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेन्सेस पे तुमने पढ़ी जे इंडिविजुअल डिफरेन्सेस आर ऑफ टू टाइप्स one is inter individual difference and the another is intra individual difference. The inter individual difference कहले कौन ना the difference that found in individual and individual other individuals, that is called inter individual difference. But what is intra individual difference? The intra individual difference is the difference that found in the characteristics of within the same individual, that is called as intra individual difference. The question is, the differences among the qualities within one individual is known as
The correct answer is option D, intra-individual differences. Then the next question is, which of the following has not been used as a basic assumption to define intelligence? Option A is learning ability, option B is adjustment to novel situations, option C is ability for abstract thinking, and option D is divergent thinking. So the correct answer is option B, adjustment to novel situations. Then the next question is, Dash constructed the first intelligence test. प्रथमे किए प्रथमे इंटेलिजेंस टेस्ट प्रथमे किए तैयारी करथिले? ऑप्शन होची बिने, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी स्टोन एंड ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिने. प्रथमे बिने इंटेलिजेंस टेस्ट तैयारी करथिले. देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक, दिस इज ए केस ऑफ डैश. Option A is intrinsic motivation, option B extrinsic motivation, option G outward motivation, and option D none of these. एठी पिला माने देखो ऑप्शन रो एठी जणा पड़ जाउछ. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हबो नाही. ऑप्शन सी आउटवर्ड मोटिवेशन गोटे किछि नाही. मोटिवेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. सो रीडिंग ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक मीन्स इट इज intrinsic motivation. The correct answer is intrinsic motivation. Then the next question is, which of the following is not a stage in a creative process? Creative process रे कोटी गोटे stage नुहे. Option A is incubation, option B management, option C elimination, and option D evaluation. The correct answer is option B management. Then the next question is, which of the Thorndike's laws of learning advocates practice makes a man perfect? Option A law of readiness, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिज. पे ऑप्शन गुड़ी तुम आंसर जापर तुम जो लॉज ऑफ लर्निंग रही से लॉ ऑफ रेडीनेस रही, लॉ ऑफ एक्सरसाइज रही, लॉ ऑफ इफेक्ट रही. तेणु कही व्हिच ऑफ द थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहले लॉ ऑफ एक्सरसाइज. एतर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, insightful learning theory is a dash. Option A behaviorist theory, option B cognitive theory, option C developmental theory, option D psychometric theory. पिला माने तबे जानि जो एटा निश्चित भावे होची ऑप्शन बी करेक्ट आंसर cognitive theory. Then the next question is, while calculating IQ chronological age is used as. Option A एटा मध्ये 2024 क्वेश्चन रे पड़िथिला. ऑप्शन ए होची डिनोमिनेटर, ऑप्शन बी होची न्यूमरेटर, ऑप्शन सी होची कांस्टेंट, एंड ऑप्शन डी होची नन ऑफ दिज. यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए डिनोमिनेटर. तो IQ रो फॉर्मूला होची कोन ना, IQ इज इक्वल टू MA by CA into 100, जहाँकि MA कहले कोन ना मेंटल एज, CA कहले क्रोनोलॉजिकल एज. MA कहले कोन ना पिला जो क्लास रो प्रॉब्लम सॉल्व करि पारछि दैट इज मेंटल एज. आउ क्रोनोलॉजिकल एज कहले तार एक्चुअल एज, जहाँकि जार हेरिडिटरी सॉरी जोटा तार माने डेवलपमेंट बा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे जो एज आसुछि क्रोनोलॉजी हिसाब रे जो एज आसुछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोसार्च इंक ब्लड टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी बिलोंग्स टू डैश टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट. ऑप्शन ए सब्जेक्टिव, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव, एंड ऑप्शन डी साइकोमेट्रिक. ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक. रोसार्च इंक ब्लड टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट बिलोंग्स टू प्रोजेक्टिव टाइप. Then the next question is, operant behavior is controlled by. Option A consequences, option B stimuli, option C both consequences and stimuli, option D neither consequences nor stimuli. The correct answer is here option A consequences. The explanation is, operant behavior which goes along with operant conditioning refers to behavior that operates on the environment or is controlled by the individual. Then the next question is, which stage of intellectual development demonstrates abstract thinking according to Piaget's theory of intellectual development?
तमर जो रही पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से चार्टा पीरियड रही गोटे हूँ सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। क्यों स्टेज रे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पिलाटी करिथाए। द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। तार एक्सप्लेनेशन होची जीन पियाजेस थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रेन मूव थ्रू 4 different stages of learning. His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge but also on understanding the nature of intelligence. Piaget stages are sensory motor stage from birth to 2 years, pre-operational stage that is age from age 2 to 7, concrete operational stage that is age 7 to 11, formal operational stage age 12 to above. Piaget believed that children take an active role in the learning process, acting much like little scientists as they perform experiments, make observations, and learn about the world. As kids interact with the world around them, they continually add new knowledge, build upon existing knowledge, and adapt previously held ideas to accommodate new information. Then the next question is, which of the following statements is not true about the relationship between society and school? The option is school is a subsystem of society. Option B, school is owned by society. Option C, society is a subsystem of school. And option D is society and school are intimately related. Question te bujo pila mane, which of the following statement is not true about the relationship between society and school? कोउटी सोसाइटी एवं समाज एवं विद्यालय भितर संपर्क भितर कोउटी आसु नाही, नट रही। तेणु करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, सोसाइटी इज ए सब सिस्टम ऑफ स्कूल। एगुड़ा सब रिलेशनशिप रही। स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी बा सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी आम जाचे। बी हूँ स्कूल इज ओन्ड बाय सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत। एवं डी हूँ कौन ना सोसाइटी एंड स्कूल आर इंटिमेटली रिलेटेड। तेणु ऑप्शन करेक्ट आंसर हूँ किए ना ऑप्शन सी, सोसाइटी इज ए सब सिस्टम ऑफ स्कूल। स्कूल सब सिस्टम सोसाइटी नुहे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए चाइल्ड्स एजुकेशन फर्स्ट बिगिन्स एट और इन। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी फैमिली एंड ऑप्शन डी कम्युनिटी। पिलाने यहाँ तुमने निश्चित जानी आंसर। तेणु यहाँ आंसर हूँ फैमिली। प्रथम परिवार ही प्रथम शिक्षा ग्रहण करें पिला। तेणु बापा माँ को प्रथम गुरु बोली कहुए। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट लिटरेसी एंड एजुकेशन। ऑप्शन ए हूँ ऑल इलिटरेट्स आर अनएजुकेटेड। ऑप्शन बी हूँ ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट्स। ऑप्शन सी हूँ सम एजुकेटेड पीपल आर इलिटरेट्स। ऑप्शन डी हूँ ए फ्यू इलिटरेट पीपल आर एजुकेटेड। तेणु आर करेक्ट आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन बी, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट्स। दोज हु आर एजुकेटेड दे मस्ट बी लिटरेट्स। Then the next question is, inclusive education ensures option A, highest academic achievement scores for all. Option B, personal needs for all learners. Option C, education for all. Option D, equal educational environment for all learners. The correct answer is option D, equal educational environment for all learners. जो मैंने inclusive education कहले कौन ना जो मैंने those who are disabled कहले CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स कहले जो मैंने होचंती डिजेबल्ड से अलग भाव में शिक्षा दि जाव ना, से साधारण भाव में साधारण स्कूल ही समस्त सांगे ही शिक्षा दि जाव। तेणु इक्वल एजुकेशन एनवायरनमेंट फॉर ऑल लर्नर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर ऑफ 21 क्वेश्चंस। देन द नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम 21 to 42 22 to 42 क्वेश्चन आंसर। वीडियो भल लगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई देव, जहाँफल सब जगह वीडियो तुम सहज